Hello friends, welcome to Guide for Nurses channel. Today video is myocardial infarction लेके MCQ. ओके, myocardial infarction लेके जो भी MCQ मैं आज एक्सप्लेन करूँगी वो सभी MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाला ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए है और जो स्टूडेंट वाला है हमारा GNM एंड BSc वो सब स्टूडेंट के लिए भी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. If blood supply to the heart interrupt more than 6 minutes, it may cause irreversible MI. Option B, cardiac arrest. Option C, irreversible MI. Option D, cardiac block. Correct option is option C, that is irreversible MI. When blood supply इंटरप्ट हो जाता है हार्ट में 6 मिनट के लिए, वो कौन सा कॉज होता है? ठीक है, इरिवर्सिबल एमआई का कॉज होता है. इफ़ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इंटरप्ट मोर देन 6 मिनट्स, इट मे कॉज इरिवर्सिबल एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी कॉमनली इफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सा आर्टरी इफेक्टेड होता है कॉमनली? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज रेनल आर्टरी, सेकेंड इज कोरोनरी आर्टरी, थर्ड इज हेपाटिक आर्टरी, फोर्थ इज कैरोटिड आर्टरी. हार्ट में कौन सा आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट एमआई का जो रिस्क फैक्टर है एंड सीएडी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेके एमसीक्यू. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल आर दी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट फर्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक, सेकेंड इज एज, थर्ड इज हेरिडिटरी, फोर्थ इज जेंडर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक, दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. यहाँ पे बोला गया था कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट कौन सा है? जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस which can be modified by decreasing intake of saturated fat in diet. Others are non-modifiable risk factor for atherosclerosis, hypertension and CAD. Next question, which one of the following is a non-modifiable risk factor for atherosclerosis? Non-modifiable: cigarette smoking, hyperlipidemia, female over 55 years of age. Second, last is sedentary lifestyle. Correct option is option C, that is female over 55 years of age, that is a non-modifiable risk factor. All are modifiable. All are modifiable. Okay. Next question. There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is a modifiable risk factor? Option A, obesity. Option B, hereditary. Option C, gender. Option D, age. Correct option is option A, that is obesity. Next question, the most common cause of coronary artery disease is option A, atherosclerosis. Option B, hyperglycemia. Option C, stress. Option D, vasospasm of coronary artery. Correct option is option A, that is atherosclerosis. Coronary artery disease is the narrowing of the one or more coronary arteries, mainly as a result of atherosclerosis. Okay, due to deposition of cholesterol, lipid, calcium into the wall. आर्टरी का जो वॉल है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड एक ब्लॉक हो जाता है. ओके, यही बोला गया है कि कौन सा कॉज है. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ऑप्शन ए, aneurysm of coronary artery. Option B, occlusion of coronary artery by an embolus. Option C, thrombus formation in the coronary artery. Option D, vasospasm of coronary artery. Correct option is option C, that is thrombus formation in a coronary artery. Okay. Next, risk factors for developing coronary heart disease including option A, smoking. Option B, hypertension. Option C, serum cholesterol. Option D, all. Correct option is option D, that is all are the risk factor for developing coronary heart disease. Next, all of the following are
non-modifiable risk factor for coronary artery disease? Option A age, option B sex, option C high blood pressure, option D family history. Correct option is option C. Because of high blood pressure is the modifiable risk factor for CAD, become blood pressure can be changed by modifying modifiable risk factor of high blood pressure, diet, obesity, stress, lifestyle, etc. Along with persistent crushing chest pain, which sign symptoms would make the nurse suspect the client is experiencing a myocardial infarction. Option A mid epigastric pain and pyrosis. Option B diaphoresis and cool clammy skin. Option C intermediate claudication and pallor. Intermittent claudication and pallor. Option D jugular vein distension and dependent edema. Correct option is option B, that is diaphoresis and cool clammy skin. Because of cardinal symptoms of MI is severe persistent crushing chest pain not relieved by nitroglycerin and rest that may radiate to neck, jaw, left shoulder and arm. During MI, apart from such type of pain, patient may also feel shock-like symptoms like systolic BP less than 80, weak pulses, cool clammy skin and diaphoresis. Meaning of this excessive sweating, okay, and oliguria. This meaning is urine output less than 30 ml per hour or 400 ml per day. Next question, cardiac indicator in MI लेके MCQ. Okay, the first question is the laboratory test which confirm a diagnosis of myocardial infarction is. Option A serum calcium APTT. Option second sedimentation rate ALT. Option C LDH CKMB troponin. Option D blood urea nitrogen. Correct option is option C, that is LDH-CKMB troponin. Because of LDH-CKMB and troponin called cardiac indicator, so its increased level into the blood confirm a diagnosis of myocardial infarction. Next question, in acute myocardial infarction which enzyme is arised first? That is option A is correct, CPKMB. Next question, which cardiac enzyme would be nurse accept to elevate first in a client diagnosed with a myocardial infarction? Okay, so answer is CPKMB. Next, the lab finding with would indicate myocardial damage है in a patient with suspected myocardial infarction. जहाँ भी बोलेगा कि डैमेज है तो वहाँ पे देखना, फास्ट ट्राई करना ट्रॉप आई या ट्रॉप टी है तो ऑप्शन में हमेशा ट्रॉप आई ट्रॉप टी लिखना. इसके बाद जो CPKMB आएगा वो देखना. ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि द लैब फाइंडिंग व्हिच वुड इंडिकेट मायोकार्डियल डैमेज इन ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ऑप्शन ए एलिवेटेड SGOT एंड LDH, elevated total CPK, elevated SGOT, decreased CPK SGOT, elevated CPKMB. That is correct answer. Next, an increase in creatinine kinase MB in isoenzyme can be caused by cerebral bleeding, intramuscular injection, skeletal muscles damage due to recent fall, myocardial necrosis. That is correct option. Next, a patient is suspected to having a myocardial infarction. The nurse assesses for elevations in which of the following isoenzyme values reported with creatinine kinase level? That is MB. Correct option is option A. Next question, which laboratory test provide the most specific information about cardiac damage? That is option A SGPT, CPKMB, LDH, SGOT.
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज CKMB, जहाँ पे आपको ये बोलेगा कि डैमेज है, ठीक है, MI विथ मसल डैमेज, तो वहाँ पे ट्रॉप आई ट्रॉप टी प्लस MB CKMB जाएगा, यानी ओनली फॉर MI ओनली बोलेगा तो देखना CKMB आंसर जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव फॉर कार्डियक डैमेज? ऑप्शन ए लैक्टेट डिहाइड्रोजन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ट्रॉप आई, CK क्रिएटिनिन काइनेज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज ट्रॉप आई बिकॉज ऑफ कार्डियक डैमेज। नेक्स्ट, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज दैट इज CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रॉप आई, CK। यहाँ पे बोला गया है कि डैमेज, ठीक है, ट्रॉप आई पहला सुपीरियर, सेकेंड ट्रॉप टी, नेक्स्ट CKMB। तो यहाँ पे पहला बोला गया ट्रॉप आई, इसीलिए ट्रॉप आई इज करेक्ट आंसर। कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल हेल्प्स इन डायग्नोस ऑफ myocardial infarction, congestive heart failure, ventricular tachycardia, atrial fibrillation, that is correct option myocardial infarction. Next question, one of the following is a new test used in acute chest pain, that is SGOT, TROP I and TROP T, blood cholesterol estimation, LDH. Correct option is option B, that is TROP I and TROP T. Next question, which laboratory investigations is essential for a patient admitted in emergency with severe angina with ST elevation? Option A, troponin level, liver enzyme, creatinine kinase level, hemoglobin. Correct option is option A, that is troponin level, यानी ट्रॉप आई ट्रॉप टी, इसके बाद आएगा CKMB। ओके, नेक्स्ट, treadmill test and stress test are used to detect congestive heart failure, arrhythmias, myocardial infarction, ventricular septal defect. Correct option is myocardial infarction. A client who had several episodes of chest pain is should schedule for exercise electrocardiogram. Which of following statement is important to counseling client? Okay, first is this is non-invasive test to check your heart's response to physical activity. Second is the finding of this test will of minimal assistance in treatment of angina. Next, the finding from this minimal invasive test will show how to your body react exercise. Next, the test is defined a method to identify actual cause of your chest pain. एक्सरसाइज चेस्ट पेन में कौन सा कॉज है, किस लिए तुम बोल रहे हो कि पेशेंट को एक्सरसाइज करो, देखो कि तुम्हारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, इसमें तुम कैसे समझाओगे। ओके, तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट रेस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी। ओके, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, angiography is a X-ray visualization of heart, lungs, blood clots, blood vessels. blood vessels का जो clotting है, blood vessels में जहाँ जहाँ भी clotting है उसको हम लोग देखते हैं एंजियोग्राफी में। वो एक एक्सरे है जो विजुअलाइज करते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, ब्लड वेसल्स। Angiography means diagnostic or therapeutic radiography of the client heart and blood vessels using a radio plug contrast medium along X-ray। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना था। थैंक यू।